Dear 12th class students, in this video you see question number 2 from exercise 5.8. Question number 2 is given. जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन-किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। यहाँ फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2। fx इक्वल मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x, महत्तम पूर्णांक फलन x and given interval x belongs to closed interval 5, 9. Since fx is neither continuous nor differentiable in closed interval given 5, 9. So here Rolle's theorem is not verified. बच्चों, ये गिवन फंक्शन fx इक्वल मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन ना तो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा और ना ही इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। आप इसे कंटिन्यूअस है या नहीं है मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्लोज्ड इंटरवल 5, 9 में किसी भी नंबर के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस नंबर पर फलन की जो वैल्यू है तीनों सेम यदि है तब कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस है। बट here we may write direct fx is neither continuous nor differentiable in closed interval 5, 9. So here Rolle's theorem is not verified. Second, fx equal maximum integer function x के लिए x belongs to -2 to closed interval। बच्चों, ये भी फंक्शन जो गिवन है मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन है, सो दिस इज आल्सो नाइदर कंटिन्यूअस नॉर डिफरेंशिएबल इन गिवन इंटरवल। सो हियर आल्सो रोल्स थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड। पार्ट थर्ड, fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 1 के लिए x बिलोंग्स टू 1, 2। थर्ड पार्ट fx, दिस इज फर्स्ट पार्ट fx इक्वल
x square minus 1 and given interval x belongs to closed interval 1 2. Since fx is polynomial function, so fx is continuous in closed interval 1 2. This is first condition of Rolle's theorem. Second condition, since fx equal x square minus 1, so its derivative f dash x will be equal to 2x which exists in open interval 1 2. So we may write here fx is differentiable in open interval 1 2. Here both two conditions of Rolle's theorem are satisfied. Third condition, fa, here understand a equal 1 b equal 2, fa f1 equal 1 square minus 1 equal 0 and f2 equal 2 square minus 1 equal 3. Here f1 is not equal f2 since first two conditions of Rolle's theorem here verified, but third condition is not verified. So we may write here Rolle's theorem is not verified. ये तीनों जो फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, इनमें किसी भी फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 में दिए तीनों फलनों के लिए मध्यमान प्रमेय की अनुपयोगिता की जांच करनी है। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में f(x) इक्वल मैक्सिमम इंटीजर फंक्शन x गिवन है और यहाँ ये देख रहे हैं f(x) गिवन इंटरवल में ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है, और फर्स्ट टू कंडीशन ऑफ एलएमबी थ्योरम इज आल्सो सेम of Rolle's theorem. So here also LMB theorem is not verified. In second part will not be LMB theorem verified. Third part you are seeing here f1 is not equal f2, so there exists at least one point
in open interval 1 to say C such that f dash C equal fb minus fa divided by b minus a. Here we have got f dash x, so f dash c will be 2c equal fb. fb means f2 3, fa f1 0, 3 minus 0 divided by 2 minus 1, we get c equal 3 by 2, which is belong open interval 1 2. So LMB theorem is verified. थर्ड पार्ट में fx इक्वल x स्क्वायर माइनस 1x बिलोंग्स टू 1 2 के लिए रोल्स थ्योरम तो वेरीफाई नहीं होती, सिंस हियर गेट f1 is not equal f2, but LMB theorem verified for given function fx equal x square minus 1 where x belongs to closed interval 1 2. Next question number here, question number 6. Question number 7, who is long answer type questions. लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय के प्रयोग द्वारा वक्र y इक्वल एक्स स्क्वायर पर वह बिंदु फाइंड करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदुओं 1 1 और 2 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। यहाँ वह पॉइंट वक्र पर फाइंड करना है जहाँ पर वक्र की टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट ये गिवन पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखा के पैरेलल हो। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। Given function y equal x square, here we apply LMB theorem on function y equal x square. For interval closed 1 2, x belongs to closed interval 1 2. First, since y is a polynomial function, so y is continuous in closed interval 1 2. Second, since y dash will be 2x
exist in open interval 1 2, so we may write y is differentiable in open interval 1 2. Third condition of LMD theorem, fa is not equal fb. Here y at x equal 1, y at x equal 1, we get 1 square will be 1, and y at x equal 2 is equal to 2 square 4. Since you understand this fa and this fb, since fa is not equal fb, so there exists at least one point in open interval 1 2, say C, such that f dash c means y dash at x equals c, f dash c equal fb minus fa divided by b minus a. Here f dash c will be 2c, since y dash equal 2x, and understand y equal fx, so f dash x equal 2x and f dash c equal 2c equal fb means y at x equal 1, this is fa, y at x equal 2, this is fb, 4 minus 1 divided by 2 minus 1, here 2c equal 3 and c equal 3 by 2. So y at x equals c, x equals c is equal to x square 3 by 2 square equal 9 by 4. So drawn tangent at the point 3 by 2 9 by 4, 3 by 2 9 by 4 will be parallel of line joining points 1 1 and 2 4, 1 1 and 2 4. This is answer. Next, question number 8. fx given है
और प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8, fx इक्वल x1 माइनस log x गिवन है। fx इक्वल x1 माइनस log x when x greater 0, x greater 0, then प्रूव करना है a minus b log c, then prove that a minus b log c equal b1 minus log b equal b1 minus log b minus a1 minus log a minus a1 minus log a when c is greater a is less b, c is greater a is less b greater 0. Here the solution, since fx equal x1 minus log x is continuous in closed interval AB, since यहाँ फंक्शन में लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन है और मैं बता चुका हूँ लॉगरिथमिक फंक्शन गिवन इंटरवल में कंटीन्यूअस होते हैं। No, here you write is continuous for x is greater 0, for x greater 0. So first condition of Rolle's theorem is verified. लॉगरिथमिक फंक्शन अपने दिए गए इंटरवल में ऑलवेज कंटीन्यूअस होते हैं। सो वी मे राइट डायरेक्टली हियर fx इक्वल x1 माइनस log x is continuous for x is greater 0. So first condition of Rolle's theorem is verified. Next, here fx equal x1 minus log x, since fx equal x1 minus log x, so f dash x equal first function and this is second function. First function differential coefficient of second function minus 1 by x plus second function 1 minus log x. Simplify this. Here minus 1 plus 1 minus log x. Here we get
f dash x equal minus log x and f dash x equal minus log x exist for x is greater 0. For x is greater 0. So f(x) is differentiable in, डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर x इज ग्रेटर 0. थर्ड, you are seeing here first two conditions of LMB theorem are verified. Third, C is greater or equal A, C is greater A and is less B. Here, since FA is not equal FB, यहाँ गिवन है लैग्रांजे के मध्यमान प्रमेय का प्रयोग करके प्रूव करना है, तो निश्चित रूप से थर्ड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C for x is greater 0 when x is greater A is less B, or when x is greater A is less B. Means we may say here open interval AB such that f dash C equal FB minus FA divided by B minus A. Here FA is not equal FB, then there exists at least one point C for x is greater 0. X is greater यहाँ दिया होना चाहिए x is greater A and is less B. F dash C equal minus log C. Minus log C equal FB Fx equal x1 minus log x. So FB equal B 1 minus log B minus FA will be A 1 minus log A divided by B minus A. Here we may write A minus B log C equal B1 minus log B minus A1 minus log A. This is proved.
बच्चों यहाँ x ग्रेटर ए इजलेस बी दिया जाना चाहिए, तब हम कहेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक पॉइंट C का अस्तित्व है, जबकि f डैश C इक्वल एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए एंड देन we get a minus b log C equal b1 minus log b minus a1 minus log a. बच्चों, after this here given miscellaneous exercise विविध प्रश्नावली. You try yourself all question of this exercise, and if any problem then tell me. Here you see question number 5. Question number 5. Question number 5 is given cos inverse x by 2. Given function here cos inverse x by 2 divided by under root 2x plus 7. Under root 2x plus 7 when कंडीशन गिवन है x ग्रेटर माइनस 2, x ग्रेटर माइनस 2 इज लेस 2. बच्चों, इस कंडीशन का हमें कोई यूज नहीं करना होगा. ये कंडीशन बस इसलिए गिवन है कि इस कंडीशन में ही इस गिवन फंक्शन का अस्तित्व है, मीन्स ये गिवन कंडीशन के लिए ही एग्जिस्ट होगा. हियर फाइंडिंग मी differential coefficient with respect to x. So we may write here d dx cos inverse x by 2 divided by under root 2x plus 7. Let cos inverse x by 2 equal p and under root 2x plus 7 equal q. Then we may write this d dx of p by q equal, we may write here denominator q into dp over dx minus numerator p into dq over dx divided by denominator square q square. Suppose this is first equation. Here since p equal cos inverse x by 2, so we may write here dp over dx equal d dx of cos inverse x by 2. Here minus 1 by under root 1 minus x by 2 square
into ddx of xy2 is equal to -1 divided by 4 minus x square under root 4 minus x square divided by 2 into 1 by 2. We get here dp over dx equal minus 2 by under root 4 minus x square into 1 by 2. Here 2 cancel, so we get dp over dx equal minus 1 by under root 4 minus x square. This is equation second, and this is value of dp over dx. Next, since see here, since q equal here under root 2x plus 7, q equal under root 2x plus 7, so dq over dx equal ddx of 2x plus 7 power 1 by 2 dq over dx equal 1 by 2 into 2x plus 7 power 1 by 2 minus 1 into ddx of 2x plus 7. जो बच्चे डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं अच्छी तरीके से, उन्हें ही समझ में आएगा। dq over dx equal 1 by 2 under root 2x plus 7 into 2. Here 2 and 2 cancel, so we get dq over dx equal 1 by under root 2x plus 7. This is second equation. Put the value of dp over dx from first and dq over dx from second in equation second. We get ddx of p by q means ddx of cos inverse x by 2 divided by under root 2x plus 7 is equal to q into, we put value dp over dx equal minus 1 by under root 4 minus x square minus p into dq over dx, this 1 by under root 2x plus 7 divided by q square. Here put value of p and q, also we may write d dx of p by q equal q means root 2x plus 7, root 2x plus 7 into minus 1 by under root 4 minus x square minus p cos inverse x by 2 divided by under root 2x plus 7
divided by q square. Q square means under root 2x plus 7 square will be 2x plus 7. Here ddx p by q. Here 2x plus 7. We may write here ddx of p by q means cos inverse x by 2 divided by under root 2x plus 7 is equal to under root 2x plus 7 into minus 1 by under root 4 minus x square into this 2x plus 7 minus cos inverse x by 2 divided by under root 2x plus 7 into 2x plus 7. You simplify this. You get minus 1 by under root 4 minus x square under root 2x plus 7. इसे डिनोमिनेटर में ला सकते हैं माइनस 1 by under root 4 minus x square. Here 2x plus 7 power 1 minus 1 by 2 under root 2x plus 7 plus cos inverse x by 2 divided by 2x plus 7 into 2x plus 7 power 1 by 2. We may write here 2x plus 7 power 3 by 2. This is ddx of cos inverse x by 2 divided by under root 2x plus 7 this is answer. Next, remaining question of this exercise. You try yourself, and if any problem, then you tell me. That's all in this video. All the best.